Parents were speaking. I was like, hello, hello. They also said hello. And he came on my hand. Then my shoulder. Then he tried to steal my sunglasses. Oh. I knows what is it. And see this cat is not leaving. Cat just came on the hand and sat on it. And my mom tried to remove it. ये आगे से मशीन है जिससे दबा दिया अरे ऐसा ही दूसरा और क्या मैंने आयुष पार्टीला
इसकी नाक पे कुछ बस कर खाने को कुछ निकलता है तो let us discuss your study plan. कौन कैसे पढ़ाई कर रहा है? ठीक है, तुम लोग का होमवर्क नहीं हो रहा है मतलब कितने क्वेश्चन है? कोई भी चैप्टर में देखा कि निकाल के अपनी बताओ कितना होमवर्क क्वेश्चन है? Open any chapter which we have completed. Let's say chapter 1. Everybody see and tell me how many numbers of homework questions are there. This total number of questions. Somebody calculate and tell me. Just count. How many? कितना है? 37. किसमें है ये? होमवर्क में. What are the types of questions? So there are different categories of questions, right? देखो, let us do that. Because this is very important. Otherwise, you won't get results. There is homework inside review. What thing? So if you look at homework, page number 15, there are only 7 questions. ठीक है? In different categories, एक तो review में 7 questions है और क्या? Then you have also direct questions. ये mostly theory है. Total how many? 15 questions. ठीक है? Then you have miscellaneous questions. ये कितने? 23. These are 23 questions. Okay, then you have worksheet.
These are 10 questions. Total how many questions? Total how many questions? 7. This is 30, 45, 55, right? ठीक है? कितना हुआ? 7 plus 23, 30 plus 15, 45 plus 10, 55. ठीक है? 55 question हो गया. ये questions. Apart from that, you have also solved examples. वो कितने हैं? Add that. How many solved examples are there? Solved exercise is there. Previous year board questions. How many are there? Previous year board questions. This is also about 15 solved. Solved exercises, let's say 20 hoga. Add this. How much is? 55 plus 20, 70. Then it is 85 questions. Okay. Let's take average number of questions per topic is 100. 100 questions. मान लो हर एक चैप्टर में लेट अस से 100 क्वेश्चंस. ठीक है? 100 तो कम से कम करने हैं एक टॉपिक के फॉर यू टू अचीव कंफर्टेबिलिटी. ठीक है? वी मीट वंस ए वीक, राइट? हमारा लेक्चर ड्यूरेशन क्या है? लेक्चर कितना होता है? वीक में एक ही होता है ना. अभी तो ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में इसलिए डबल लेक्चर हो रहा है. दिस इज आल्सो वैकेशन. फॉरगेट अबाउट दिस वैकेशन पीरियड. हमारा जो वीकली रेगुलर लेक्चर होता है कितना होता है? 1 लेक्चर पर वीक. वो 1 घंटे का होता है तुम्हारा. मतलब टॉपिक कंप्लीट करने के लिए कितने लेक्चर्स लगते हैं? एटलीस्ट ऑन एन एवरेज एक चैप्टर को 6 आवर्स लग रहा है. ठीक है? 5 to 6 कितना? इंटू 5 to 6, 5 ले लो ऑन एन एवरेज. ठीक है? तो 5 घंटा मतलब 5 वीक्स हो गया. ठीक? तो तुम्हारे पास कितना टाइम है एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करने के लिए? कितना टाइम है? 5 weeks. Let's take conservative estimate here. 4 weeks to complete your homework. 4 weeks. To do the homework of one chapter, how much time you have at hand? 4 weeks. ठीक है? तो अगर तुम हर दिन 4 week का मतलब कितना दिन हो गया? कितना दिन हो गया? 20 प्लस कितना हो गया? 25. 4 6 कितना है? 7 4 28. 28 डेज है तुम्हारे पास. ठीक है? When you start doing this, when you start implementing this, okay, initially you may take little time till you get settled down. एक equilibrium stage आने में टाइम लगता है. ठीक है? तो तुम क्या करो? एक दिन में कितना क्वेश्चन करना है? एक दिन में 10 क्वेश्चन कर सकते हो. 10 तो कर सकते हो एक दिन में, क्योंकि क्वेश्चन हर क्वेश्चन बड़ा नहीं होता. कभी कभी जो एमसीक्यू टाइप का वो 1 मिनट में तुम 2 क्वेश्चन भी कर सकते हो. एक दिन में 10 क्वेश्चन करो बस. ठीक है? या ज्यादा कर सकते हो तो अच्छी बात है. अगर तुम 10 दिन में करते हो तो 85 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा तुम्हें? 8 दिन. ठीक है? 10 क्वेश्चंस पर डे. Within 10 days you can do 100 questions. Don't tell me कि you don't have time to do the homework क्योंकि 100 क्वेश्चन है. 100 से कम क्वेश्चन है एक टॉपिक में. तुमको डिवाइड करना, अपना एक टाइम टेबल बनाना है. हाथ पैर ऊपर करके लंबा नहीं होगा. वैकेशन है ना. तो ये मैंने टाइम टेबल कब का दिया? जब तुम्हारा स्कूल भी चल रहा है और तुम्हारा कोचिंग भी चल रहा है. 10 क्वेश्चन यू कैन इजिली डू इन हाफ एन आवर टू 1 आवर. तो जो भी सब्जेक्ट या टॉपिक तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है, यू हैव टू फाइंड टाइम और प्लान बना के प्लान वे में स्टडी करो. ऐसा मत सोचो अरे बाप रे इतना काम करना है. ऐसे मत सोचो. टेक
1 2 3 क्वेश्चन एट ए टाइम। प्रॉब्लम क्या हो जाता है, तुम क्वेश्चन देके इतना ज्यादा क्वेश्चन है इसलिए पहला क्वेश्चन भी नहीं करते, स्टार्ट ही नहीं करते हो। इतने क्वेश्चन कौन करेगा? अरे सब करते हैं भाई, तुम कोई एक्सेप्शनल नहीं हो, हर बच्चा करता है, हर साल करता है, फिर लास्ट में 100 आउट ऑफ 100 मारता है। तो प्लान है वो, गधे से गधा बच्चा लास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है अगर वो प्लान फॉलो करता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब करते हैं। आधा एक घंटा तो निकालना पड़ेगा सेल्फ स्टडी के लिए। ठीक है, कर लोगे तुम लोग तो नेक्स्ट टाइम मेरे को तुम्हारी होमवर्क नोटबुक चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस उसमें किए होने चाहिए, तुम ट्राई करो, नहीं होता है हेल्प चाहिए, आई विल डू, बट आई वांट टू सी सम एफर्ट ऑन योर साइड। ठीक है, समझ में आया? टोटल क्वेश्चन भी 100 से कम है, कम से कम 35-40 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन तो हम लोग क्लास में ही करते हैं। कितने क्वेश्चन किए हमने, तुमने एनालाइज किया क्लास में जो मैंने क्वेश्चन कराए? 25-30 क्वेश्चन से ज्यादा ही किए। दैट इज इनफ फॉर यू टू गेट ऑन ट्रैक, बट टू अचीव द कंफर्ट लेवल, जब तक तुम खुद से नहीं करोगे वो कंफर्ट लेवल नहीं आएगा। इज इट क्लियर? आर वी सॉर्टेड? करोगे तुम लोग होमवर्क खुद से, या बोझ तले दबने वाला फीलिंग आ रहा है? हाँ, ऐसा कोई बोझा नहीं है, ये बहुत थोड़ा है, तुम्हारा काम ही है पढ़ना। तुम स्टूडेंट हो, तुमसे और कोई काम कराता है क्या घर पे? और कोई काम करते हो क्या घर पे, गेम्स गेम्स खेलने के अलावा? ठीक है, तो ये चाहिए मेरे को नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जब भी आ रहा हूं मैं फ्राइडे को, कुछ तो करोगे। कितना कितना टाइम डिवोट करना है पर डे? हाफ एन आवर टू 1 आवर, हाफ एन आवर टू 1 आवर सिंसियरली। सो नेक्स्ट फ्राइडे वी आर मीटिंग, राइट? ट्यूसडे को लेक्चर नहीं है, कल वाला लेक्चर अपना कैंसिल है, तो कल कोई और लेक्चर है। ठीक है, फाइंड हाफ एन आवर टू 1 आवर टू डू होमवर्क एवरी डे। डेली थोड़ा थोड़ा डिवाइड करो, डेली डीटीपी में, डीपीपी में, डीपी व्हाट यू डू, you work out a DPP for yourself, daily practice plan. ठीक है, अब तुम डिसाइड करो 10 क्वेश्चन के लिए तुम्हें कितना टाइम चाहिए। 1 आवर पर सब्जेक्ट। ठीक है, 1 आवर में तो आधा घंटा दे दो। कितने सब्जेक्ट है तुम्हारे को? हाँ, 10 सब्जेक्ट है। कौन सा 10 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो भाई? हमने तो 5 ही पढ़े थे। 10 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तुम, कौन से कौन से? केमिस्ट्री, इंग्लिश, सब सब्जेक्ट में सेम टाइम लगता है क्या पढ़ने में? अंग्रेजी, हिस्ट्री, सिविक्स के कोई सब्जेक्ट है क्या? तो तुम लोग सब्जेक्ट मानते ही नहीं। चलो ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है, लेकिन वो तो खाली पढ़ सकते हो ना। मैथ्स, फिजिक्स, इसमें थोड़ा अलग अप्रोच की जरूरत है। ठीक है, तो लेट्स टेक पीसीएमबी वाला जो भी है तुम्हारा। इसके अलावा और क्या सब्जेक्ट है? और क्या है? इंग्लिश, और क्या है? हिस्ट्री, सो सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी, उसमें आ गया ना सब। क्या क्या है इसके अंदर? हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, और क्या सब्जेक्ट है? मराठी, 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 और क्या? हिंदी, हिंदी मतलब सब मराठी और हिंदी। 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको कंप्यूटर्स। ओके, चलो जल्दी नीचे, चलो उठो, जल्दी चलो, आ जाओ। डोंट आर्ग्यू, जस्ट वॉक आउट। उठ प्रत्युष, उठ जाओ, उठ जाओ, डोंट
Don't argue, just चलो walk उठो। out. क्या कर रहे थे मैडम ये लोग? सर ये मस्ती कर रहे हैं, टपली मार रहे हैं एक मिनट ठीक एक है। दूसरे को। जाओ बेटा अपने बाहर ही. सर, No argument. Walk out. I warned you in previous class also. ठीक है. तो ये जो स्टडी प्लान मैं दे रहा हूँ तुम्हें ये प्लान करना है. ठीक है. सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज विच सब्जेक्ट्स विल रिक्वायर मोर टाइम. उसको तुम हर दिन थोड़ा टाइम देना ही है. समझ आया? जो भी तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है यू कैन नॉट मिस आउट. एवरी डे यू हैव टू गिव सम टाइम. ठीक है. एंड डू इट रिलीजियसली. एवरी डे यू हैव टू फॉलो अ डिसिप्लिन. डोंट चीट योरसेल्फ. तो तुम्हारा क्या प्लान है? 1 आवर पर सब्जेक्ट या हाफ एन आवर कर लो उसको. चलो, लेकिन डेली होना चाहिए. और मैथ्स फिजिक्स में एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चंस पर डे. अगर तुमने पर डे किया तो 5 दिन में 25 क्वेश्चन हो जाते हैं. समझ में आ रहा है? एक ही दिन में नहीं करना है. एक दिन में कितना करना है? 5 या 10 ही करना है. तो अगर तुमने 10 दिन किए 10-10 क्वेश्चन तो 100 हो गए तुम्हारे. तो तुम अपना टाइम एक्चुअली वेस्ट करते हो और कुछ नहीं. यू डोंट रियलाइज इट बट यू आर एक्चुअली वेस्टिंग योर टाइम इन अननेसेसरी थिंग्स. वरना टाइम शॉर्ट नहीं है. हर दिन का एक वर्कआउट प्लान करो. हर दिन का एक प्लान बनाओ एंड फॉलो इट रिलीजियसली. होएगा. तो नेक्स्ट टाइम मेरे को ये नहीं सुनना है कि टाइम नहीं मिला या ये कर रहे थे या 25 लैंग्वेज है या 25 सब्जेक्ट हम कर रहे हैं. नहीं, 25 है तो 25 के लिए टाइम फाइंड आउट करो. दुनिया में सबके पास 24 घंटे हैं. एक बच्चा अगर अच्छा कर सकता है तो बाकी सारे भी अच्छा कर सकते हैं. डिफरेंस क्या है? वो गिवन 24 आवर्स में से अपने टाइम को वाइजली यूज कर रहा है जो अच्छा कर रहा है, और जो तुम लोग नहीं कर रहे. तुम लोग बहानेबाजी बना रहे. अरे तू फिर शुरू हो गया प्रत्युष. You don't realize, you think you're speaking in a very small tone, but it creates conflicts. तू क्या उसको राय दे रहा? चौधरी है क्या तू? क्या बात कर रहा है उसके साथ? सुन रहा है इधर मैं जो बोल रहा हूँ? तेरे लिए बात हो रही है यहाँ पे. तेरे को टाइम नहीं मिलता है ना करने के लिए कुछ. वही समझा रहा हूं मैं. तो नेक्स्ट टाइम मेरे को ये नहीं सुनना है कि टाइम नहीं मिला. टाइम फाइंड करो. एक बच्चा कर सकता है तो दूसरे भी कर सकते हैं. ठीक है. सो यू ब्रिंग योर होमवर्क नोटबुक विदाउट फेल. कितने क्वेश्चन किए हैं करो. अभी हम नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे फ्राइडे को. फ्राइडे कब आ रहा है? अभी 3 या 4 दिन के बाद. तो सबके नोटबुक में अगर 5 क्वेश्चन पर डे है तो 20 क्वेश्चंस होने चाहिए. समझ आ गया? 20 क्वेश्चन तुमने ट्राई किया हुआ होना चाहिए तुम्हारे नोटबुक में. इज दैट क्लियर? हाँ, 5 क्वेश्चन एक दिन में आराम से कर ही सकते हो. ठीक है. और ये रोज करना है. तब तुम देखो फिजिक्स कितनी आसान हो जाएगी. ओके. सब ऐसे ही करते हैं जिसको भी परफॉर्मेंस चाहिए. ओके. So I'm just going to erase it. This is going to be available in the video. You can pause and take the screenshot if this helps. You cannot achieve your goal without plan. मतलब तीर मार रहा है, गोल ही है नहीं तो तीर लगेगा क्या निशाने पे? पहले तुमको टारगेट तो सेट करना पड़ेगा. टारगेट है नहीं तो दौड़ रहा है. कहाँ जाना है पता नहीं. पहले टारगेट बनाओ. डेली 5 to 10 क्वेश्चन, ये टारगेट है. फिर तुम टाइम निकालोगे इसके लिए. लेकिन जब पता ही नहीं कि करना क्या तो करोगे कैसे? इज दैट क्लियर? गोल सेटिंग ऑन ए डेली बेसिस. हर सब्जेक्ट का जो भी वीक है उसको पहले लो और बाद में सब होना शुरू हो जाएगा. सबसे पहले डिफिकल्ट वाला ही लो. ठीक है. फिर बाकी सब इजी हो जाएगा. ओके. तो कहाँ पे थे हम लोग? फैक्टर्स दैट अफेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये हो गया था.
Okay, effect on speed, wavelength, and frequency due to the refraction effect. Okay. Okay. So whenever the refraction is taking place, देखो अभी तुम्हारा लाइट जो है हाँ बोलो Temperature is indirectly proportional to refraction. इसका देखा नहीं कोई. यस टेम्परेचर की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का चेंज हो जाएगा क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी कम हो जाएगी बिकॉज द मीडियम विल एक्सपैंड नो एवरी मीडियम विल सफर एक्सपेंशन ड्यू टू हीटिंग तो उसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो गया तो आरआई क्या होगा कम हो जाएगा ठीक है तो क्या रिलेशन है म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा ऐसे रिलेशन से जाओ टेम्परेचर हाई हुआ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो ठीक है कहां पे डायरेक्ट रिलेशन है कहां पे इनवर्स है मोस्ट क्वेश्चंस आर मेड ऑन रिलेशनशिप एक वेरी होता है तो उसका इफेक्ट दूसरे पे क्या आता है सारे क्वेश्चन उससे ही बनते हैं ठीक है तो लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे बिल्ड होती है वंस यू नो कि व्हेन वी ब्रिंग इन चेंज इन वन पार्ट हाउ इट अफेक्ट्स द अदर पार्ट तो या तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा या इनवर्स होगा और कुछ नहीं है आइदर डायरेक्ट और इनवर्स इसी पे बन जाएगा सारा कुछ ठीक है तो अब देखो whenever refraction is taking place तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी यहां पे जो एफ है यहां पे भी वही रहने वाला ठीक है देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन the frequency of light remains same in both mediums. क्यों? Because frequency depends on source. Because this is because frequency depends on source of light. ठीक है अब जैसे अगर मैं साउंड का एग्जांपल दूं ठीक है लाइट इज आल्सो अ वेव साउंड इज आल्सो अ वेव ठीक है व्हाट प्रोड्यूसेस साउंड द वाइब्रेशंस ऑफ आवर वोकल कॉर्ड ठीक है तो जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं व्हेन यू स्पीक एवरीबॉडीज वॉइस इज डिस्टिंक्ट है ना सबका पता चल जाता है कोई भी बोल रहा है तो ये पता चलता है कि कौन बोल रहा है व्हाई बिकॉज यू हैव अ डिस्टिंक्ट वॉइस यू हैव डिस्टिंक्ट साउंड because your vocal cord vibrates with a unique frequency सबका frequency अलग है vocal cord का so the source of sound is the vocal cord and each source has unique frequency so sound produced is function of frequency of the vocal cord right just like that light का जो frequency है that depends on the source of light let's say this is a bulb let's say this was a yellow bulb so it will produce a light of yellow color of a certain frequency. If I take another yellow color bulb, that also will be yellow, but it will emit light at a different frequency. Understood? Yellow color, but different unique. Like we are all humans, same vocal cord, but every vocal cord is producing sound with unique frequency.
So no two sources of light will produce light with the same frequency. So if it is yellow color, it's not that it is unique. There is a range of frequency for a yellow color also. That's why in spectrum, when you see yellow color, so the wavelength is a range. It has a band of wavelength. You understand? Are you getting it? So each frequency is a function of the source for any wave, right? तो यहाँ पे ये जो लाइट आ रही है वो किसी सोर्स से आ रही है, लेट्स से सम बल्ब और लेजर टॉर्च. So this is how it is. Leave it. Door closer, you just leave it. Now second. So if frequency is constant, and what is this relation between speed and frequency? For any wave, irrespective of sound wave, light wave or any wave, the wave velocity, frequency and wavelength of the wave are related by this formula. Correct? So like how the wave is represented, it's like this. Yes. So I hope you are familiar with wave terminology. This is called one wave cycle. Okay, one wave cycle. So number of cycles produced per second. Number of cycles produced per second is frequency. Right? You've learned about it. What is frequency? The source is producing how many cycles? That is its frequency in unit time. Cycles produced. So this is constant, we are saying, during refraction. So if frequency is constant, then what is this? This is equal to constant lambda. This means V is proportional to lambda. If the frequency is constant, then what is the relation between speed of the wave and wavelength? Direct proportion, right? And now, when the light is entering from rarer medium to denser medium, its speed reduces. So therefore, its wavelength also will reduce. So here, let us say the speed is V1. Here it will be V2. And likewise, here the wavelength was lambda 1. So here it will be lambda 2. What will be the relation? Lambda 2 will be less than lambda 1. Whenever the light is entering from rarer to denser. Likewise, V2 will also be less than V1. Because what is wavelength? It is the distance covered by the wave during one wave cycle. Okay? Distance. So what is wavelength? This is wavelength. Distance covered by the wave in one wave cycle. So that is wavelength. So bigger the wavelength, bigger will be speed. Only speed is affected in the second medium. Therefore, wavelength also has to be affected because frequencies are constant. Is that clear? Okay. So on refraction, what all will change? Velocity will change and wavelength will change. There will be no change in frequency. Is that clear? Is that clear? Okay. So on refraction only, wavelength and velocity will change. Frequency will remain constant. Okay. Thus, both wavelength and speed of light will change on refraction, during refraction. Okay. I'll switch on the AC now. It's all right. So we are almost reaching the end of first unit. Okay, so just write down till here. Then we'll do the experiment. How to do experiment?
तो कोई करेक्टर वर्ड ना मैं मिस कर जाता हूँ ग्रामेटिकली तो करेक्ट this is I must have said but I have not written because the speed of speaking is more than speed of writing so I end up writing the last word sometimes so it has to be this is so grammatical error spelling error please correct yourself sometimes I just go with the flow but yes increase also. By reversibility, it's going from 2 to 1. Yes. Yes. So it will change. Because change over. Speed of will change over. Frequency change. Here, next is experimental verification of Snell's law. We have to now do an experiment to verify Snell's law. What is Snell's law? That is sin I upon sin R is equal to constant. This is what we have to verify, right? So how will we verify? We require a refracting medium. Refracting medium हमको let's take a rectangular glass lamp. So take rectangular glass lamp. ठीक है एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लो उसके बाद क्या करोगे to place it on a chart paper you have a table two photos this way take it on a chart paper right table पे chart paper रख के you place the rectangular glass slab like this let us say kept the rectangular glass slab like this ठीक है उसके बाद everybody look here now you insert two pins on the other side ठीक है insert two pins on the other side and look at those pins from your side ठीक है and then by keeping one eye closed when the pins are aligned only the nearest pin will be visible to you the pin behind won't be visible to you that means both the pins are in the same line right so if you have one pin here and one pin here right now you're watching from the other side with one eye closed now insert one more pin okay and then insert one more such that with one eye closed only the closest pin is visible to you what does it tell you it tells you that all are in the same line correct so when you do this what will you get okay and experimentally you've got this now what do you do remove all the pins and remove the slabs you run a pencil while you have kept the glass slab here so you now get the boundary of the base of the glass slab in the chart paper now what do you do remove the pins so the impression of pin you now join them so you got 2 points join it okay they join here also okay we mark what it is
Okay. When you were watching the pins, you saw them in the straight line. But actually, how it has come out? It has come out like this. This is how it has come. Okay. So for one observation, we will now measure the angle of incidence. Okay, so this is what was expected because now there is a change of medium. It ought to bend here in the second medium. Right? Ram is watching you again. Don't be so smart. अभी punishment मिला है. ठीक है? So you can measure the angle of incidence and angle of refraction using your protractor. Right? So once you measure these angles for this angle of incidence, okay. Now you can make an observation table. So the observation table is serial number, angle I, angle R. First observation. So you've taken the first observation. You measured I1, R1. Okay. Now you take the second observation. Change the position of the pin. So you can now measure I2 and R2. I3, R3. So on and so forth. Everybody understood? This is the experimental data we have. So what we have to do, we have to verify that sin I by sin R is constant. So now from this table of sines, you find out what is sin I. Okay, so write this. You have sin I1, sin I2, so on and so forth. Also find out sin R2. R1, R2, you have sin R2. So for respective angles that you measured experimentally, now you're calculating sin I and sin R2 using the table of sines that you already have. So once you got these values, now you calculate sin I by sin R. And you will find that you get the same value for all observations. You get same. So you get it constant. Okay. Let us say if it was glass, for this also you get 1.5, 1.5, 1.5. So so is the law verified? This is what we wanted to prove. So what is the pair of medium here? Air and glass. So if the medium is air and glass, we calculated this is coming constant, and this constant we have named as mu1, mu21. Constant है ना? यही तुम्हारा mu21. और उसके एवरेज ले लो सबका, अगर अलग-अलग आता है. This is how you will calculate the refractive index of the medium. This is 1.5. ठीक है? So लैब में तुम किसी भी मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते. Understood? Just very important. But sin I and sin R is following constant for the given pair of medium and the chosen color of light. This light is monochromatic. Let us say laser torch होता है ना, एक single color का light आता है, red या फिर green. Yes, when you are doing the experiment, this is the monochromatic ray.
What is it? Monochromatic. This is not white light. Prism is also refracting medium. But here, the surfaces are not parallel, they are inclined. Look here. This is a refracting medium with parallel incident and refracting surface. Okay? But for prism, what you have inclined. So then the refraction happens in a different way. We'll come to it. Okay. We can also do the same experiment without measuring the angles. यहाँ पे हमने क्या किया? Angles को measure किया. I और R for different cases. अलग-अलग angle of incidence लेके we measured I and R. Then calculated sin I and sin R. ठीक है? Instead of measuring angles, what you can do is the second alternate method. Alternate method. Calculate. Now, you can also find sin I and sin R without measuring the angle. वो कैसे करेंगे? So for that, what you do is draw the circle. Okay. When you draw the circle, then you complete this triangle. But two right angle triangle. Okay. So now this is O. This is ABCD. This you can call EQRS. Now you are getting two right angle triangles. So what is sin of I? Sin of I is perpendicular upon hypotenuse. So what is perpendicular for sin I? This is PQ by PO. What is sin of R? Sin of R is RS upon RO. Okay, just by measuring the lengths of the right angle triangle for every observation, now you can calculate sin I directly. Using the ratio of lengths of right angle triangle. Correct. For every observation, now you calculate sin R directly. Just by measuring the sides of the right angle triangle and taking the ratio. Right. So these are two ways in which you can calculate sin I and sin R. One, first method by measuring angles. Second, by measuring the lengths of the two right angles. Is it understood? Then calculate sin I by sin R for all different observations. We get the same.
सबको समझ आ गया? Now the next topic is lateral displacement. So I'll use the same diagram. Lateral displacement. Rectangular glass slab. Okay. So you've already seen this. Yes, so we've already done this experiment. Now some more observations from the experiment is you have A, B, C, D. This is B, U, R, S. This is. What is the observation? You just have to list the observation. Whenever you study the refraction of light by a rectangular glass slab, right? What is the observation? First observation is the emergent ray is parallel to the incident ray. What is the observation? Observation. The emergent ray RS is parallel to the incident ray EP. Now here, emergent ray is parallel to incident ray. That is angle I is equal to angle E. This is observation. So, what does this mean? Is there any angle of deviation between incident and emergent ray? Is there any deviation? No, they are in the same direction. Parallel rays are always in the same direction. Therefore, there is no deviation
of emergent ray with respect to yes, there is no deviation of yeah, क्या नहीं समझ you're asking about related to subject या बता क्या हो गया बोलना वो तो लिखवाया ना मैंने so the question is homework same book में करना है या अलग book में करना है that depends on your convenience ठीक है as long as you know कि यहाँ से यहाँ जो मैंने किया वो homework है या मैं जब पूछूं तो तुम बता पाओ that's all right that's your call I'm okay feel that a separate homework notebook will drastically increase the weight of your bag. Okay? In the same notebook. That's fine. Okay, दूसरा observation क्या है? The emergent ray is laterally shifted. There is a lateral shift from X to Y. What has happened to the emergent ray? It has laterally shifted from the original path. Okay, so it is just laterally shifted. The emergent ray is laterally shifted. That's the solution. Okay, so you just have to mention these two observations. You just calculate trigonometry. Use trigonometry. No, you can use trigonometry to calculate it. देखो, how much is the lateral shift? This consider Q R dash. Okay, so what is this angle? Angle of deviation. What is angle of deviation? I minus R. As long as you I and R, right? These things can be experimentally measured. So you have this angle, you have hypotenuse, right? Hypotenuse and this sine delta is equal to this by this. What is the lateral shift? You can calculate. Okay, lateral shift calculation can be done trigonometrically, but most of questions say even if they ask us, is it not easy to do? Just the sine relation, right? What is the lateral shift? Everything is experimentally measurable. Look here. You can calculate this if you want. RR dash is equal to x pi. Is the gap between parallel rays right? No. Sine delta also can be measured experimentally. Exactly, of course. But that deviation can be done experimentally. Exactly. Provided you are doing experiment. Even if it goes from denser to linear, but इसको बनाया गया है. So for air and glass you can. देखो इधर यहाँ पे it travels from denser to rarer, that also you can find.
अगर तुम यहाँ से ऐसे जाओगे तो भी कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, लेकिन लेटरल कैलकुलेट करने के लिए तो मैंने नहीं देखा है। Any doubts here? This is all about lateral displacement by rectangular glass slab. With this, we now come to the okay. What are the factors on which the lateral displacement will depend on? Factors on which lateral shift depends. Okay. Now, if you look here, can you tell me what are the factors on which lateral shift will depend? If I change the angle of incidence, then what happens? If I decrease the angle of incidence, angle of refraction also decreases. तो ये अगर इधर आएगा तो क्या होगा? This shift will change. So first is angle of incidence. It depends on angle of incidence. Second factor is it will also depend on the thickness of the refracting medium. If I increase D को मैं यहाँ ले आऊँ, so this direction remains same, but now the lateral shift increases. Okay. Thickness of the medium. It will also depend on the refractive index of the medium. For the same angle of incidence, if the Ri of the medium is more, R will change. So lateral shift will change. Correct? So it will depend on refractive index of the medium. Also, it will depend on wavelength of incidence. Okay? All the factors that affect the bending of ray will affect bending. Okay? Lateral shift is the consequence of property of the material. Lateral shift is becoming fun for you guys. In your notebook, don't do this mistake. I spent time. Correcting features is fun. Do you have any questions? Let me go further. Multiple images. Next topic is
Now we are going to see the images formed inside a thick mirror. Okay. So the vanity mirror that you have in your home is basically thin. It's a thin mirror, right? What if you have a thick mirror? If we have a thick plain mirror, okay. So how many images will be found? We shall see. Imagine there is a object here. Object is this object's image we are going to see in the mirror. Okay. So how many rays we require to obtain the image? Minimum two, correct? So let us say one is falling along the normal. Okay. So partially it will be reflected and maximum will travel straight. Okay. This is the reflected. So the reflection will be from the upper as well as the bottom surface of the mirror. Okay. And the second ray will take is oblique. So let's take the oblique ray. First ray, no deviation in the refracting medium. This is refracted from the bottom of the mirror and partial reflection from the top surface. What happens here? What will happen here? Partial reflection, and it will also maximum ray will travel inside, maximum, but partial ray will be here. So at this place also, there is reflection and there will be a okay. So this is the partial reflection and maximum light will pass inside. And here it will suffer reflection. Okay. There it will suffer reflection. What happens here? At this surface also, now let us analyze this. Let's call this as perspective of A1, A2 is this.
Oh, let's call this as A, and this is QRS वहाँ पे आ रहा है. Okay, let's say this is KLMN and this is the scenario. Now let us discuss this. What is A? Everybody look here. What is A? You tell me what is A? A is the object. Okay. So two rays are taken from this. This is along the normal and AB is the incident ray. At B what happens? Huh? So let's call this as B dash. This is B dash. C dash. B dash. So what is BB dash and what is BP? What is BP? Partially reflected ray. And what is BB dash? Refracted ray. Right? Then what is happening at point B dash? Reflected. Because from the lower surface MK, only reflection will take place. Because this is the silver coating. It is a mirror. Right? What is CQ? What is CQ? CQ is refracted or reflected? CQ is refracted. Emergent is refracted. What is CC dash? Partially reflected. Okay? So there is a difference between B and C point. So what about the image formation? Look here. How the image will form. So the reflected rays are going. What is happening to the output rays? It is diverging. So where is the image now? This image will form here. Let's say this is A1. What about this? So this is A2. This is so this is A2. This will be A3. And so on and so forth. Okay, so how many images are formed? Whenever reflection of light takes place in the big mirror, how many images are formed? Finite. Images will be infinite because it will go on because we have shown only 4 rays. But there could be infinite possibilities, right? So this looks curved. Actually, these are straight. Okay, this is straight. See the diagram in your book. So whenever you see reflection by a big mirror, infinite images will be formed. So what is the observation? Observation. Finite number of images. Number of images will be formed. What is the second observation? The second image will be brightest. Now you got to tell me why. Second image is brightest. You got to tell me why second image will be brightest. So
So what is CQ will have maximum light energy. CQ will have maximum light energy because emergent ray CQ carries maximum light energy. Just see if it makes sense to you. Why CQ carries maximum light energy? अरे आपकी आरे की why CQ will carry maximum light energy? See the diagram very well. Yes, thank you. You like talking. Like talking. Hello, hello. Second image is brightest. Why? Huh? Question is why the second image A2 is brightest? ये समझाना है ना लिखोगे कैसे? I'm asking CQ carries maximum light energy. Explain कैसे? क्योंकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है? यहाँ से लाइट आ रही है ये तो ठीक है ये तो सबके लिए कॉमन है यहाँ से क्या हो रहा है बी पे क्या हो रहा है पार्शियल रिफ्लेक्ट हो रहा है पार्शियल तो मतलब कम लाइट एनर्जी है ना लेस ठीक है पार्शियल रिफ्लेक्शन आ रही है जहां पे भी पार्शियल रिफ्लेक्शन है वहां पे लाइट एनर्जी बहुत कम जाएगी से 100% अगर आ रहा है तो उसमें 4% जाएगी ठीक है तो 96% यहाँ आ गया तुम्हारा ये क्या है ये रिफ्रैक्शन REFL लिख दिया ये क्या हो रहा है रिफ्रैक्शन तो 96% एनर्जी यहाँ पे आ गई अब यहाँ पे क्या है 100% रिफ्लेक्शन यानी जितना यहाँ पे आया आगे जा रहा है क्या नहीं पूरी एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट अब सी पे क्या हो रहा है सी पे पार्शियल रिफ्लेक्शन कौन सा ये पार्शियल रिफ्लेक्शन है कि ये नहीं ट्रांसमिट हो रहा है ना मीडियम चेंज हो रहा है वन से टू ये रिफ्रैक्शन है ना सिर्फ फर्स्ट रे पार्शियल रिफ्लेक्शन है बाकी सब क्या है रिफ्रैक्शन है तो जो पार्शियल रिफ्लेक्शन हुआ ये इधर हो रहा है बी टू सी है बाकी सब जगह पार्शियल रिफ्लेक्शन इनसाइड हो रहा है ये सब क्या है ये क्या है रिफ्रैक्शन ये सब रिफ्रैक्शन तो रिफ्रैक्शन में अगर ये पार्शियल था यहाँ पे कितना बचा था 96% 96 में से 4 और निकाल दो कितना बचा 92% बाहर आ गया अब ये जो भी हो रहा है खाली बैलेंस 4% ये मैक्सिमम लाइट बाहर आ गई उसके बाद क्या उसके बाद यही होगा ये जो 4% है उस 4% में से यहाँ पे फिर 4% निकला 4 का 4% बैलेंस इधर नहीं वो तो लीस्ट ही है ना क्योंकि वो 4% में से हो रहा है सबको समझ आ गया अरुयाकी कम यार वो कोना पकड़ के बैठती है सो दैट यू नो ओल्ड एज के ओके कम आउट you also come दोनों आए
Explain why the second image is brightest. I just explained, right, while you were chatting. We just explained. Now see what is happening and explain why the second image is brightest. That's what I know. You must tell me now. कहाँ से maximum? जाओ A पे जाओ. Object से 100% energy is incident on the plane ML. What is थोड़ा पीछे? Object is A, right? So 100% light is coming. दो ray एक यहाँ पे आ रहा है और एक ऐसे आ रहा है. ठीक है? फिर क्या होगा? कौन सा वाला रिफ्लेक्ट हो रहा है? BP पार्शियली रिफ्लेक्ट होता है. तो पार्शियल रिफ्लेक्शन में एनर्जी कम होता है ज्यादा होता है? कम होता है. ओनली 4%. लेट अस से मैक्सिमम एनर्जी कहां पे चला गया? रिफ्रैक्ट हो गया अंदर. ठीक है? इस केस में मैटर नहीं करता है, जो भी है वो एक कॉमन है सबके लिए. ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पे आ गया. अब व्हाट इज हैपनिंग एट द बॉटम सरफेस? सबका टर्न आएगा अभी. ठीक है? What is happening at the bottom surface? To this ray, जो यहाँ से रिफ्रैक्ट हुआ उसको क्या हो रहा है? 100% रिफ्लेक्शन. ठीक है? So what is happening at point C? Huh? Which is refraction? CQ or CC dash? At point C, what is refraction? CQ or CC dash? Okay, so refraction carries maximum energy क्योंकि वो ट्रांसमिट हो गई. अब जो रिफ्लेक्ट हुआ है यहाँ पे कितना आया था? 96%, है ना? 96% फिर से 96% सी पे पहुंचा. अब 92% बाहर निकल गया और यहाँ से फिर से 4% इधर. ठीक है? 92 मतलब मैक्सिमम बाहर निकल गया. इट्स गॉन, राइट? अब ये 4% यहाँ पे आया, बहुत कम लाइट आया. यही 4% यहाँ हुआ. 4% का 96% बाहर गया. ऑलरेडी 4% ही था, बहुत कम लाइट है ना. इट इज वेरी फेंट. उसका मैक्सिमम अगर बाहर जा भी रहा है तो एनीवे इट इज लेस एनर्जी. उस लेस का लेस. समझ में आया? सो देयरफॉर दिस रे हैज टू बी ब्राइटेस्ट इमेज. ये वाला समझ आ गया? बाकी सब कैसा होगा? फेंट इमेज होगा क्योंकि अभी एनर्जी बची नहीं. इट्स वेरी मिनिमल एनर्जी. Is that clear? So you have to find the way to write all this. अगर explanation पूछा, ये तो हमने बताया. Sometimes they ask you why CQ has maximum light energy. ठीक है? You should be able to write. Everybody understood? Only CQ has maximum energy because most of the refracted energy passes from it. Which one? Behind. Okay, boys, just shift back. You got to help girls, right? Strong boys. Go back and switch off the AC. I mean, if I switch off, then you need to remain seated here, right? Switch it off. I'll just switch it off. कौन सा है? For some time, okay? Relax for some time. Don't talk too much. You'll feel normal. When you talk so much, that's the problem. Everybody understood why the second thing is brightest? So with this, we have come to end of unit 8. Now, next topic is refraction of light through a prism. Now, what I'll do is I'll complete the entire chapter and we'll do numericals in that. Okay, okay? So let me go further. Refraction of light by a prism. Can I erase it? Yes. Have you written it down? ठीक है, नहीं किया तो बुक में से देख लेना. I'm just going to erase it.
Yeah. Through a prism. Now, we just saw refraction of light by rectangular glass prism. So, rectangular glass prism is a material with high refractive index, which is 1.5, right? Now, refractive index of prism is also same because it is also made up of glass, but now its shape is different. So, what is the shape of prism? A prism is a transparent medium. Okay, this is how prism looks like. It is a transparent medium. Has how many surfaces? 5. 3 rectangular and 2 triangular. What are the triangular surfaces? One of the triangular surfaces. What are the rectangular surfaces? ADEB, then ADC, ADFC, and BFC. Okay. ADFC. Correct. Okay. So there are three rectangular and 2 triangular surfaces. Now, what are these surfaces? These two. Okay, these two are called refracting surfaces. This is the base of the. Okay. The bottom surface is the base of the globe. AD is called refracting edge. Okay. AD is called refracting edge. So what happens during refraction? The light is incident from this surface, ADEB. Light is incident from this side. This is how it comes. Okay, so light is made incident from surface ADEB and it comes out from surface ADFC. Okay. Now we will work. The ray diagram for reflection of light via prism. So we don't use the prism like this drawing the ray diagram. We'll just use the triangular face ABC. Okay. तो उसमें तो ray diagram तो क्या बनाएंगे? We will just make face ABC.
So what is this point of incidence? And at the point of incidence, we have drawn the normal, right? And then rays entering from rarer to denser medium. So what will happen inside the prism? It should bend towards the normal, right? So this is the original direction. It will now bend towards the normal, like this. Okay, this is how it will bend. It will bend towards the normal. Now you make another normal here. Now what is happening to this ray? Denser to rarer. So it will go away from the normal. So now again, simple. So what is the angle this time? Compare it with the case of rectangular glass slab. This is the emergent ray now. This is the angle of incidence. Is the emergent ray parallel to incident ray? No, not in this case. But there is an angle of deviation. What is the angle of deviation now? This is the angle of deviation. Now you have angle of deviation. It's not shifted laterally. So this is what happens. The question you asked. Since the prism surfaces are inclined to each other, they're not parallel. So there is no lateral shift. There is deviation. Okay, so this is the first difference. This is what? Which corresponding angle? Yeah, there. You're talking there. Rectangular case. Where is corresponding possibly? Come here. No? Okay. So now, is the ray diagram for refraction by prism clear to everyone? There is no lateral shift. There is a deviation observed here. Okay. Now we need to derive the relation between different angles. With angle of deviation clearly visible to the delta. That is delta. Shall I make a bigger diagram? Let me make a big diagram. This is ABC. Okay, so this is the diagram. Now, what is angle of refraction here? What is angle of refraction? This is angle of refraction. And by principle of reversibility of light, this will be angle of refraction. Okay, let's time over. Okay, just draw the diagram. Any more questions?